Hello everyone, this video is for grade UKG. Let us start. This sheet is divided into three parts. So we will get to know about three different subjects which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject which is of English. The question says, color the letter that matches the beginning sound. ओके क्या करना है, उस लेटर को कलर करना है जो बिगिनिंग साउंड से मैच करे. किसके बिगिनिंग साउंड से? जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनका जो बिगिनिंग साउंड है उससे मैच करे. मीन्स फर्स्ट लेटर. पहला पिक्चर किस चीज का बना है? द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ जार. एक जार की पिक्चर बनी है. सो जार स्टार्ट्स विथ लेटर जे. जे A R jar. So we will color the letter J. Next is the picture of kite. It is the picture of kite. Kite starts with letter K. So we will color the letter K. K for kite. K I T E kite. In this way you have to recognize the picture and identify the match that beginning sound. Okay, beginning sound के match को आपको identify करना है. Understood? So let us revise A to Z with one words and their spelling. A for apple. A double P L E apple. B for ball. B A double L ball. C for cat. C A T cat. D for dog. D O G dog. E for elephant. E L E P H A N T elephant. F for fish. F I S H fish. G for grapes. G R A P E S grapes. H for hen. H E N hen. I for eyes. I C E eyes. J for jug. J U G jug. K for
king. K I N G. King. L for lion. L I O N. Lion. M for monkey. M O N K E Y. Monkey. N for nose. N O S E. Nose. O for owl. O W L. Owl. P for parrot. P A double R O T. Parrot. Q for queen. Q U double E N. Queen. R for rabbit. R A double B I T. Rabbit. S for sun. S U N. Sun. T for ten. T E N. Ten. U for umbrella. U M B R E double L A. Umbrella. V for van. V A N. Van. W for watch. W A T C H. Watch. X for xylophone. X Y L O V H O N E.
xylophone. Y for yak. Y A K. Yak. Z for zebra. Z E B R A. Zebra. So we have read A to Z with spelling of one letter. Let's move to our next section, which is of EVS. The question says, name the different modes of transport with one example. So how many modes of transport are there? Land transport, water transport and air transport. Land transport, water transport and air transport. Along with this you will write an example also. एक example भी आप यहाँ पर write करेंगे. Okay, like land transport है तो क्या है? कार, बाइक, बस. अगर एयर ट्रांसपोर्ट है तो क्या है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट, हॉट एयर बलून. और या फिर अगर वाटर ट्रांसपोर्ट है तो फिर इसका एक एग्जांपल को कार नॉट बोट, शीप, सबमरीन. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले तो आप लिखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मोड्स हैं और फिर उसका एक एक एग्जांपल भी साथ में लिखोगे. अंडरस्टूड? वेरी गुड. Now, let us move to our last section, which is of maths. In this, you can see so many pictures in 9 groups. Okay, 9 group बने हुए हैं. 2 pictures की group है. 9 groups हैं. And what we have to do in this? Circle the smaller picture with blue and the bigger picture with purple. So, blue और purple color से आपको circle करना है. मीन्स जो छोटा पिक्चर होगा मीन्स स्मॉलर पिक्चर को आपको ब्लू कलर से सर्कल करना है और जो बिगर पिक्चर है, बड़ा पिक्चर है, उसे पर्पल कलर से सर्कल करना है. व्हाट यू विल डू? यू विल सर्कल द स्मॉलर पिक्चर विथ ब्लू कलर एंड द बिगर पिक्चर विथ पर्पल कलर. इफ यू हैव पेंसिल कलर, सो use those pencil colors for circling smaller picture with blue and the bigger picture with purple. छोटे पिक्चर को ब्लू कलर से सर्कल करना है और बड़े पिक्चर को पर्पल कलर से सर्कल करना है. अंडरस्टूड? I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.